Hello, good evening everyone. So today we have a sort of a strategy session for SLAT, जिसमें हम दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे कि सिम्बायोसिस एज अ कॉलेज कैसा है, थोड़ा सा ये डिस्कस करेंगे. बट मोर इम्पोर्टेंटली हम एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्जाम के क्या क्या सेक्शंस हैं, किस तरह पैटर्न चेंज हुआ है इस साल 2022 में, एंड वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days and on the day of the exam. These are our the things that we are going to discuss. So we have with us Praveen sir, Girish sir and Hema ma'am, who will help us in figuring out कि हमें logical section में, reading comprehension section में और general awareness section में किस तरीके से अपनी preparation को ढालना चाहिए. So that is going to be our agenda. So just to lay out the pattern of the exam to you, there are going to be 5 sections. One section is legal reasoning, another is logical reasoning, then another is analytical reasoning. Please note that there are 2 sections जो थोड़े से confusing same लग सकते हैं. Logical reasoning और analytical reasoning दो अलग अलग sections हैं. Then there is a section on reading comprehension and last section which is on general awareness, general knowledge. So let's start with reading comprehension. Praveen sir, can you tell us कि over the past few years what sort of questions you have seen in SLAT and क्या expect करना चाहिए बच्चों को? Absolutely. Right. Let me start with this session here. Boys and girls, I'm sure everybody's in. Now we can definitely share our thoughts. I believe everybody's in. Boys and girls, for all those who are still willing to come in, please come in a little faster so that we all can help you out with it. And for all those students who are still new to this YouTube channel, I would request you all to please make sure that you subscribe to this YouTube channel so that the latest information reaches you on time and in time. So there are several YouTube sessions which we have already lined up. Say, for example, we would also be having a SLAT analysis, and we are going to have GMAT analysis. We are also going to have the indoor analysis. So there are different analysis sessions which are lined up. So I would request you all to make sure that you already like those videos so that as soon as we start with the session, it pops up and gives you the information for that. Okay. So let me start with the paper called SLAT paper. As Saral sir has already talked about it, how the paper would be, इसका क्या pattern होगा जी, आपके सामने दिख ही रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए. But let me tell you, boys and girls, over the period of time, we have observed one thing. इस सब चीजों पे जाने से पहले मैं आपको एक calibrate कर दूं. That when we are talking about this paper, which is primarily SLAT paper, that is what we are referring to. Let me tell you one important pointer here. And the important pointer is, as you all are aware of it, that there is no negative marking to it. So hooray, there is no negative marking to it. That's what you need to understand. Every question, the entire paper is for 60 minutes. The entire paper is for 60 minutes. 60 minutes, 60 questions. That's what you're supposed to go. 1 mark per question and there's no negative marking. तो जब नो नेगेटिव मार्किंग होती है वहां पे कंपैरेटिवली आसान होता है. हमें पता है कि आगे कोई लैंडमाइन नहीं है तो हम धड़ल्ले से भाग सकते हैं, मगर हाँ, हमें भागना इस स्पीड पे है कि हम गिरे नहीं, क्योंकि जब हम गिरेंगे तो दूसरा व्यक्ति आगे निकल जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग माय एनालॉजी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो बहुत ज्यादा कॉशियस होके इस क्वेश्चन पेपर को देने की जरूरत नहीं है, एज यू वुड हैव गिवन फॉर अदर पेपर. से फॉर एग्जांपल इफ यू वुड हैव प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट, जहां पे एक क्वेश्चन को चूज करना वो इंपॉर्टेंट था, मगर यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चन करना, मैक्सिमम क्वेश्चन करना, this is what the strategy with respect to the SLAT, right? I'm sure for all the students who are here, I would request you to just drop in a hi for me so that I should understand that everything is clear for you. Good enough. Thank you. Thank you for dropping in a hi. Right. So what we are talking about here is that's going to be a 60-minute duration, 60 questions. पेपर आसान होने वाला है आपका पेपर. दिस पेपर इज ऑन 3rd of July and that'll be only for 1 hour. थैंक यू दिवांश. राइट. एंड सुबह आपका 9 से 10 के बीच में पेपर हो भी जाएगा. करेक्ट. तो अब सवाल ये नहीं है कि सर 60 क्वेश्चंस, अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, सो इट कम्स आउट टू बी 1 क्वेश्चन पर मिनट, राइट, और 1 मिनट पर क्वेश्चन. इफ दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, आई मीन दैट डजंट मेक एनी सेंस हियर, बिकॉज यहाँ पे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर टोटल 60 में से कितने में उनको सॉल्व करने चाहिए, मैक्सिमम इज व्हाट दैट यू हैव टू गेट इनटू. Please understand this. By the advent of this, the national education policy, and with the penetration of the CUET, many of the students are now prepared, right? इस बार बहुत सारे students ऐसे देखे हैं जिनका शायद पहले वो इन पेपर्स के अंदर इंटरेस्ट नहीं भी लेते थे, मगर अब वो इंटरेस्ट लेना उन्होंने शुरू कर दिया है. तो दैट मीन्स आपका कंपटीशन उनके साथ भी होगा. आपका कंपटीशन उनके साथ भी है जिन्होंने क्लैट 2 साल एक बार ड्रॉप करके तैयारी
की है, तो कंपटीशन उनके साथ भी है। आपका कंपटीशन उनके साथ भी है जिन्होंने आईलेट दिया था। आपका कंपटीशन हर उस स्टूडेंट के साथ है, द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट. सो इन दैट कंडीशन व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट इज, दो द पेपर वुड बी इजी. Why? Because you have already prepared. Number two, you had enough time to prepare. So the paper would be easy because you have already prepared. But the now thing would be that we are supposed to go with something that would fetch me maximum marks. तो यहाँ पे maximum marks लाने हैं. Negative marking इसकी कोई है नहीं. सुबह सुबह आपका पेपर हो जाएगा. 1 घंटे का पेपर है. बहुत ज़्यादा abstruseness is what that I'm not looking into the paper. Another pointer that you need to understand here is, अगर मैं पिछले पेपर से, जैसे अभी सरल सर ने कहा कि बताइए सर इस पेपर में आपको पिछले रेफरेंस को देखते हुए आपको कैसा लगता है ये पेपर, तो मैं आपको इसके अंदर कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एंड रेफरेंस में शेयर करना चाहूंगा. दैट वुड रेफर टू दिस. जनरली जो पैसेजेस इसके अंदर आते हैं, ये पैसेजेस अलग अलग रेफरेंस से आएंगे, राइट. एज अ लॉ स्टूडेंट आई एम सपोज टू रीड फ्रॉम डाइवर्सिफाइड फील्ड, नॉट जस्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, नॉट जस्ट फ्रॉम पॉलिटी, बट ऑल्सो फ्रॉम हिस्ट्री, फ्रॉम अ फिक्शन, फ्रॉम अ नॉन फिक्शन, फ्रॉम द माइथोलॉजी. करेक्ट. वी हैव सीन दैट देयर आर पैसेजेस फ्रॉम द माइथोलॉजी एज वेल. तो आपको अलग अलग रेफरेंस से आएंगे. से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लिटरेचर बेस्ड पैसेज रुडयार्ड किपलिंग एंड कॉलोनियलिज्म का एक बहुत अच्छा रेफरेंस यहाँ पे गिवन है, जो कि एक पॉलिटिकल रेफरेंस के अंदर आता है. Similarly, I hope you can see there is something known as a passage 1 which talks about the maternity benefits, right? That's what there is talking about. What does it account for? क्या होता है, कैसे होता है, and so on so forth. Then you would have also seen that they are also talking about technological changes on our environment. So obviously they are talking about downsides for that. Similarly, on a passage 1, when we look at another year, we find it talks about the evolution of humans. So primarily it is starting with the history, anthropology. ये वो historical और anthropological का passage था, correct? Moving on, we are also going to talk about Indian agriculture. We are also going to talk about how a detective functions. So उसका पूरा process क्या होता है, process क्या होता है. So misinformation and media. This was again an important and interesting topic in 2021. Obviously COVID-19, जो कि 21 में आपका आया था. So that was again an interesting pointer to note about, and the nation stages. We also talk about the medical termination of pregnancy act. So any kind of an act can be taken and then you are supposed to go along with this. अब मजेदार बात ये आती है कि सर पूरे इसके अंदर मुझे आप बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. So when I refer to this, as you can already see reading comprehension, you will have only 2 passages. You will have only 2 reading comprehensions with 6 questions each. 6 क्वेश्चन के 2 पैसेजेस होंगे और उसको आपको देखना होगा. अब सवाल ये आता है कि सर क्या आप मुझे और बता सकते हैं कि इन 6 क्वेश्चन में से कैसे डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं. इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे आपके फैक्ट बेस्ड, 2 होंगे थीम बेस्ड और 2 होंगे आपके वोकैबुलरी बेस्ड, राइट. सो एवरीथिंग इज सो कैटेगराइज्ड. अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर ये स्लैट पेपर कैसा है, तो ये कैटेगराइज्ड पेपर है. इसे पता है कि इसने क्या देना है. कोई बहुत ज्यादा एब्स्ट्रूजनेस लाइक क्लैट पेपर और इस साल के आईलेट के पेपर की जैसे हम बात करें कि एक बिल्कुल ही वेरिएशन अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला. इट्स गोइंग टू बी द सेम वन. बट द ओनली थिंग, हैविंग सेड दिस, आई वुड अगेन से द ओनली थिंग दैट यू ऑल नीड टू कंसिडर हियर इज एन इंपॉर्टेंट पोर्शन टू मैक्सिमाइज योर स्कोर. Maximizing your score would be one of the important pointers. Now the question comes in, sir, say for example if you're talking about 6 questions here, तो in 6 questions में से कितने questions doable होंगे. बट ऑब्वियसली इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कितने डुएबल होंगे. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर मैं कहूं कि देयर आर 12 क्वेश्चंस इन देयर, राइट. सो से फॉर एग्जांपल एज ऑलरेडी मेंशन्ड देयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 12. सो इफ देयर आर 12 क्वेश्चंस इन देयर, इसमें से 10 क्वेश्चन और लेट मी से 9 क्वेश्चंस आर समथिंग लाइक व्हिच वुड हैव अ 100% एक्यूरेसी. देन द 3 क्वेश्चंस वुड बी समथिंग लाइक जिनकी एक्यूरेसी लेवल शायद 70% से कम की है. नेगेटिव मार्क्स है नहीं, मुझे करना तो है ही है, मुझे सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. हो सकता है अगर 70 से कम होगी तो इसमें आपके जो सही हो जाएंगे वो 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट हियर इज क्वेश्चन पेपर would definitely be easy for various reasons. Reason number 1, you are already prepared. Number 2, you have already prepared for the CLAT. Number 3, you have already prepared for other papers. Number 4, you have already done number of mocks. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पेपर को कंपैरेटिवली इजी डिसाइड करेंगे. सो दिस इज व्हाट माय रेफरेंस फॉर यू वुड बी कि इसके लिए आपको डाइवर्सिफाइड रीडिंग होना जरूरी है. दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू गो. नाउ द क्वेश्चन दैट विल कम फ्रॉम योर साइड इज कि सर आपने कहा वोकैबुलरी, सो डज दैट मीन दैट आई एम सपोज्ड टू गो विद एब्स्ट्रूजनेस ऑफ द वोकैबुलरी, वो डिफिकल्ट वर्ड्स, क्या लीगल मैक्सिम्स, द déjà vu variety words, should I be getting into those French understanding? My answer to that would be जितना किया है that will be a very good trigger to go along with.
राइट। सो जितना आपने किया है वो बहुत अच्छा ट्रिगर है इसके लिए, कोई अलग से करने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ देखिए, किसी भी चीज को करने के लिए टेम्पो बना के रखना पड़ता है, अपने आप को कैलिब्रेट करके रखना पड़ता है। सो स्लैट के लिए आपको अपने तरीके से अपने आप को कैलिब्रेट करना है। सो एक बार जब अपने वो कैलिब्रेशन हो गया, देन ऑब्वियसली यू कैन डेफिनेटली गो इन दैट। सो दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग दैट आई वुड से, दैट अ वर्बल जो इसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन है, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। इसमें से आई बिलीव 9 क्वेश्चंस is something that I would say definitely with 100%, and the remaining 3 questions can be with the 70% accuracy. Vocabulary not so great, a moderate variety. Theme based questions हमें पता है, tone हो सकती है, theme हो सकती है, what could be the next paragraph, what is author trying to say, what is the crux of the passage, ऐसे questions होंगे। Fact based questions generally passage के refer में होते हैं। For example, paragraph second they have said this line, what is the reference of that line? Actual में वो fact based भी inference based होता है, to be very precise, वो fact based भी inference based है। So that is how the entire verbal section, or I'll call it as reading comprehension, would go. Saral sir. Thank you, sir. Thank you for actually breaking down the entire 12 questions into their individual components. I think that students would have found that to be very helpful. Hema ma'am, in the GA section, do you have anything of note to add for the students as far as the pattern is concerned, या फिर what they should do in the next 2 days? Yes, so first of all, a very good evening to everyone. And when we talk about the general awareness section in CLAT exam, or let's say in any other exam, right, we can say that it is a make or break section, and especially in this exam, because if I talk about other 4 section, right, your logical reasoning, analytical reasoning, your verbal ability, or your legal reasoning, right, वो चारों आपका इस exam में maybe आपको easy to moderate level का मिलेगा, but when we talk about general awareness, we have seen in past 3 to 4 years that general awareness का जो level होगा, it will be from moderate to difficult. Last year it was very difficult, right? And those 12 questions, I can say हर स्टूडेंट के लिए, अगर वो हिंदू न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो डिटेल में न्यूज को नहीं देख रहे हैं, इट कैन बी चैलेंजिंग, बट द पॉइंट इज अगेन, बच्चा अगर सिर्फ ये देख के कि ओके पास्ट ईयर से काफी डिफिकल्ट, बहुत डेप्थ में जाके क्वेश्चन आ रहे हैं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, अगर इस थिंकिंग के साथ जाएगा तो ऑब्वियसली वो पहले ही क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चंस को छोड़ देगा, राइट? मैंने पहले ये डिफिकल्ट वाली बात इसलिए बोली सो दैट आप बाद में जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे, उन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। नाउ when we talk about how to tackle such questions, सबसे अच्छी चीज इन स्लैट एग्जाम ये है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, so we can use our तुक्का पावर there, right? But how to use our तुक्का पावर wisely, वो कैसे करना है? आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन रीड करता है एंड देखता है कि ओके मुझे आता है, नहीं आता, ओके नहीं आता, छोड़ो आगे चलते हैं। Don't do that. Read the question carefully, read the options carefully, and there will be something जो आपको strike करेगा. This is somewhere related to it. For example, last year there were questions जो कि statement based थे. For example, अगर हम बात करें, there was a question World Sustainable Development Summit. So international summit पे question था. अगर हम sustainable development की बात करें, it is in news from past 5 years, right? And क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है, क्या क्राइटेरिया, आई थिंक जो बच्चा रेगुलर है विद करंट अफेयर्स उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा। अब जिसने ये क्वेश्चन जस्ट पढ़ा हो कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट पे क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, मुझे नहीं आता एंड वो आगे बढ़ गया, बट अगर बच्चे ने उसको ढंग से रीड किया होता, दैट वाज रिलेटेड टू इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर उसने ढंग से वो पढ़े होते, उस टाइप के 1 लाइनर क्वेश्चंस हमने अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस में कवर किए थे। सो अगर बच्चे को क्वेश्चन रीड करके लग रहा है, या बच्चा पार्टी आपको कहीं से भी क्वेश्चन रीड करके लग रहा है नहीं आता, मेरा सिंपल सजेशन होगा एक बार स्टेटमेंट्स एंड ऑप्शंस जरूर रीड कीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि ऑप्शंस रीड करके चीजें क्लियर हो जाती हैं, राइट? देन नाउ इफ वी टॉक अबाउट टाइप ऑफ क्वेश्चंस के कैसे क्वेश्चंस आएंगे, स्लैट का पैटर्न ये रहा है कि ना तो वो डायरेक्ट स्टैटिक जीके पूछता, वो डायरेक्ट हिस्ट्री में घुस के आपसे मॉडर्न हिस्ट्री या हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया और हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा ना। आपसे वो ये पूछेगा दैट सो एंड सो आईएनसी कांग्रेस सेशन कब हुआ, ना वो ये पूछेगा व्हिच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट और ग्रीन प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट। They will ask you the things which are directly or indirectly related to current affairs. So if there will be any static GK question, वो आपका कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होगा,
right? For example, if we talk about personalities also, right? So अगर recently किसी की कोई book release हुई जिसमें किसी famous personality को main character दिया गया है, right? तो उन personality, I'll take an example, let's say महात्मा गांधी, राइट? अगर रिसेंट टाइम में किसी और ऑथर ने महात्मा गांधी पे कोई बुक लिखी है, जरूरी नहीं है आपसे उस बुक पे क्वेश्चन पूछा जाएगा. दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन द बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी. For example, my experiment with truth. So as I always say in the class, that always try to link one thing to other, right? So if you are doing history, that doesn't mean कि आप सिर्फ history करोगे. History में if you are talking about a place, try to connect it in relation to geography. If we are doing current affairs में if we are talking about a personality or a place and उसका अगर कोई historical reference है, do that. And अगर उसका कोई constitutional reference है, if there is some act related to it, if there is some amendment related to it, you need to think about that also, right? So कभी भी SLAT में आपको direct question नहीं मिलेंगे. Yes, कुछ direct question हो सकते हैं जैसे largest trading partners. अब बच्चा normally याद करता है सिर्फ okay, who is the or which country is the largest trading partner of India, क्योंकि उनको लगता है इससे ज्यादा क्या पूछेंगे. But when I talk about symbiosis, वो इससे ज्यादा पूछते हैं जो मेजरली न्यूज में होता है. फॉर एग्जांपल, लास्ट ईयर यूरोपियन यूनियन वाज मेजरली इन न्यूज एंड उसके ट्रेड टाइप्स वर आल्सो इन न्यूज. तो उन्होंने अलग से कुछ नहीं पूछा, दे डायरेक्टली आस्क्ड दैट which of the following is the largest trading partner of European Union. So आपको उस thinking से सोचना पड़ेगा whenever you are doing your revision. अब तो नया नहीं कर सकते, बट जब आप रिविजन कर रहे हो आपको ये सोचना है आप एक चीज को दूसरी चीज से लिंक करके कैसे देख सकते हो. Then there were questions on Tiger Status Report of India. So categories अगर मैं यहाँ पे बच्चों को बताना चाहूँ क्या important है, तो फर्स्ट इज इंटरनेशनल समिट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. स्पेशली इफ कोई भी इंटरनेशनल समिट या कॉन्फ्रेंस या मीटिंग इंडिया में कंडक्ट हो रही है या किसी इंडियन लीडर के थ्रू कंडक्ट हो रही है, राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सेकेंड, अवार्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट टू हाईएस्ट कैटेगरी वाले. फॉर एग्जाम्पल, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2019 में जब लास्ट टाइम भारत रत्न दिया गया था, अभी उसके बाद से मिला नहीं है. सो एट दैट टाइम भारत रत्न से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन रिसेंट विनर्स पे क्वेश्चन नहीं था. क्वेश्चन था हु आर द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न. सो बच्चे को ये भी पता होने चाहिए पहले तीन कौन थे. एवरीथिंग इज देयर इन आवर मिसलेनियस, इन आवर जीए बुक 2, जो हम बच्चों को रेफर भी करते हैं. यू नीड टू क्विकली रीड ऑल दोस थिंग्स जो बच्चा नॉर्मली अवॉइड करता है, हम फोकस करते हैं बेटा करो, राइट. वन मोर थिंग, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दीज विनर्स, राइट, आप रीसेंट विनर्स पढ़िए, आप ये भी पढ़िए कि वो अवार्ड्स किस फील्ड से रिलेटेड हैं, किस आप कह सकते हो किस रिस्पेक्टिव फील्ड में दिए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सरस्वती सम्मान पे देयर वाज अ क्वेश्चन लास्ट ईयर. सो बच्चे को अगर नहीं पता कि सरस्वती सम्मान किस फील्ड में दिया जाता है, बच्चा अगर फर्स्ट ऑप्शन म्यूजिक है सोचेगा ये आंसर है, अगर सेकेंड ऑप्शन एजुकेशन है उसको लगेगा ओके सरस्वती शायद ये आंसर है, थर्ड ऑप्शन देखेगा लिटरेचर लगेगा ओके ये भी आंसर हो सकता है, एंड डी ऑप्शन और कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ऑल ऑफ दीज. तो अगर बच्चे को क्लैरिटी नहीं है अबाउट द फील्ड ऑफ द अवार्ड्स तो बच्चा जरूर कंफ्यूज होगा. आंसर सरस्वती सम्मान इज ऑब्वियसली रिलेटेड टू लिटरेचर, तो बच्चों को अवार्ड से रिलेटेड करंट पार्ट किसको मिला है, सबसे पहले किसे मिला था, एंड वो किस फील्ड से रिलेटेड है, वो सब जानना बहुत जरूरी है. देन नेशनल न्यूज एज इन अगर इंडिया में कोई मेजर स्कीम, कोई गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च की गई है जिसकी इंपॉर्टेंस है, कोई बड़ा चेंज आने वाला है जिसकी वजह से उज्ज्वला योजना हो गई, उज्ज्वला स्कीम हो गई, राइट. सो इस तरह की जो स्कीम्स है उन पे जरूर फोकस करना है. देन रैंकिंग्स एंड रिपोर्ट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. रैंकिंग्स एज इन आपसे कैसे भी रैंकिंग पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और पास्ट फ्यू इयर्स अगर हम देखें, every year there is a question on ranking or some report. जैसे last year था on Tiger Status Report, right? Last to last year there was a question on Happiness Index. Last to last year there was a question on World Intellectual Property Index. तो अगर स्टूडेंट्स की हम बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंडेक्स है वो जानना जरूरी है. इंडिया के जो इंडेक्स रिलीज होते हैं, इंपॉर्टेंट रैंकिंग रिलीज होती है. फॉर एग्जाम्पल, अवार्ड से रिलेटेड जो रैंकिंग होती है, जैसे नेशनल वाटर अवार्ड में विच स्टेट हैज बीन रैंक्ड एट फर्स्ट
in water conservation strategies. So इस तरह के questions बच्चों को पता होने चाहिए. Answer of this question for this year is Uttar Pradesh. So ऐसे questions जो है वो बच्चों के mind में होना चाहिए कि मुझे ऐसे questions पे तो जरूर focus करना है. Then there can be questions on books and authors, as I told you. Recent वालों के साथ साथ जो important books and authors of all the time है वो जरूर आपको focus करनी है. Plus miscellaneous type questions काफी देखे गए हैं इसमें. For example, अगर recently कोई news आया है जिसमें हम refer कर रहे हैं world's first और लेट्स से इंडियाज फर्स्ट, राइट. सो स्टूडेंट को उससे रिलेट करके ये पता होना चाहिए मिलती जुलती चीज क्या पहले भी कुछ थी, अगर थी तो कौन था, फर्स्ट पर्सन और समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट को लेके आए दिन कोई ना कोई न्यू रिकॉर्ड बन रहा है, राइट. सो फर्स्ट डॉक्टर कपल टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, इट वाज लाइक दैट. फर्स्ट ब्लाइंड पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट विद इन एशियन, फ्रॉम एशियन कंट्री. सो इस तरह के रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो बच्चों को कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए. फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, first women to climb Mount Everest, first Indian man to climb Mount Everest, first Indian women to climb Mount Everest, and recent person, youngest person to climb Mount Everest, and like that. इस तरह के facts बच्चों को clear होने चाहिए. तो India's first, world's first, India's largest, longest, highest, smallest, biggest, world's largest, longest, smallest, highest, biggest. इस तरह के फैक्ट्स अगर दिख रहे हैं बच्चों को न्यूज में, करंट अफेयर्स में, बच्चों को सबसे पहले उन पे फोकस करना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आएगा. 12 क्वेश्चन है, लेकिन ये 12 क्वेश्चन करने में बच्चे की एक बार को हालत खराब होगी. लगेगा हमें कुछ नहीं आता, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सब टफ लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है. आप क्वेश्चंस रीड करोगे, ऑप्शंस देखोगे, अब बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे. मैं ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगी बच्चों से कि हाँ जी 12 के 12 आपके 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए. करने तो है 12 के 12, रीजन बीइंग नेगेटिव मार्किंग नहीं है. सो ऑल 12 अटेम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पे भी लग रहा है सबसे ज्यादा चांसेस इस आंसर के हैं, नहीं आता, मार्क इट एज द आंसर. अगर 50-50 लग रहा है तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करो या कुछ भी करो, बट मार्क आंसर. क्वेश्चन छोड़ना नहीं है. 60 क्वेश्चन है, 60 के 60 अटेम्प्ट करके आना है. क्या कैटेगरीज हो सकती हो मैंने बताया, और जैसा मैंने कहा स्टैटिक जीके पे क्वेश्चन आ सकता है, बट इफ दैट इज रिलेटेड टू करंट अफेयर्स. ऐसे ही कुछ भी रैंडम उठा के स्टैटिक जीके से क्वेश्चन नहीं आएगा, ना साइंस से, ना इको से, कॉन्स्टिट्यूशन से. आ सकता है जस्ट दैट कि वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड होगा. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस. So, Hema ma'am, there are few questions that are coming up here, and सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है स्टूडेंट की तरफ से. मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन कि मान लीजिए जैसे रशिया यूक्रेन वॉर का सिस्टम है, तो क्या यूएसएसआर के क्वेश्चंस आ सकते हैं? क्या ये सोचा जा सकता है? यस सर, इनफैक्ट इससे क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट हमने यूएसएसआर से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से फीचर्स लिए हैं, रीजन बीइंग स्लैट. लीगल पर्सपेक्टिव सोच के वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि हमने यूएसएसआर से क्या क्या चीजें बोरो की हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो दे कैन आस्क कैपिटल्स, दे कैन आस्क करेंसीज आल्सो. सो जो कंट्रीज न्यूज में हैं उनके कैपिटल करेंसीज भी बच्चों को पता होनी चाहिए. लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन रशियन कैपिटल, if I'm not wrong, Russian capital, or maybe there was a question on some capital of some country which was the news. Right. So you also said that ये जो indices हैं, इन indices को भी एक बार देखना जरूरी बनता है. So is there any hierarchy that we can formulate? For example, human development index में से अधिकतर आते हैं, corruption index है, happiness index है. Yes. So if we talk about now the most important indexes, so we have provided a list of important indexes and ranking in our current affairs booklet. बढ़िया. तो उस लिस्ट को अगर बच्चे ने एक बार देख लिया है, और अभी जो recent मंथ में, क्योंकि फरवरी में बुक प्रिंट हो जाती है, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून में जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस एंड रैंकिंग आए हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दोज रैंकिंग्स इन द क्लासेस. सो हैंडआउट्स में जो भी रैंकिंग्स कवर हुई हैं, प्लस वी हैव अपलोडेड मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस, उनमें जो रैंकिंग्स कवर हुई हैं, 3 चीजें फोकस करनी है. अगर इंटरनेशनल रैंकिंग है, रैंक ऑफ इंडिया, टॉप रैंक कंट्री, एंड किसने रिलीज की वो रैंकिंग. ये तीनों चीजें होती है जिसपे क्वेश्चन आ जाता है. लेट्स से इन तीनों के अलावा अगर कुछ पूछेंगे तो जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं व्हाट आर द मेन इंडिकेटर्स. सो इससे ज्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. इंडियाज रैंक, टॉप रैंक कंट्री, और मे बी लोअर रैंक कंट्री, चांसेस बहुत कम होते हैं. किसने रिलीज किया, एंड 4 क्या इंडिकेटर्स हैं. अगर हम बात करें लेट्स से मेजर इंडेक्सेस की, फॉर एग्जांपल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स. एंड हैप्पीनेस इंडेक्स पे इंडिकेटर्स का आना मुश्किल है बिकॉज देयर आर 16 इंडिकेटर्स. वो कैसे पूछेंगे? नो,
Yes, sir. Okay. So what we are assuming is, if for last 6 months student has gone through the monthly compendium and is also scanning through the newspaper, वो Yes. उसके लिए एक बहुत अच्छा base होगा in order to Yes. attempt this 12 questions. That's what you say, ma'am? Yes, sir. Absolutely. Saral sir, up to you now. Thank you, madam. Thank you, Hema ma'am, and thank you, Praveen sir, for those very insightful questions. Coming now to Girish sir. Sir, लॉजिक के 2 सेक्शन आ रहे हैं, एक का नाम एनालिटिकल रीजनिंग है, एक का नाम लॉजिकल रीजनिंग है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, एंड सेकंड, व्हाट टू एक्सपेक्ट? ओके, हाय एवरीवन. सो बात कर लेते हैं सबसे पहले डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है हमारे एग्जाम का, राइट? स्पेशली रीजनिंग वाले पार्ट की क्या डिफिकल्टी होने वाली है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? सो वी हैव टोटल 24 क्वेश्चंस, राइट? लॉजिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चंस, and then analytical reasoning 12 questions, right? And then we'll discuss ki hamare logical reasoning means what they are going to cover in this particular section, and then we'll talk about analytical reasoning. So difficulty hone wala hai easy to moderate, not very difficult, right? Most of the questions doable hone wale, right? Easy to moderate means इवन जो हम क्लास में ड्यूरिंग क्लासेस जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उससे इजी क्वेश्चंस होने वाले, उससे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होने वाले, राइट? तो मेक श्योर कि इसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है? सो लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं. We have total 12 questions in logical reasoning, and logical reasoning में the most important topic is, very first one is critical reasoning. You'll find some questions from this particular topic, critical reasoning. And critical reasoning में कौन सा टाइप आपके एग्जाम में पूछा जाएगा? सिंपल क्वेश्चंस. You'll find some one-liner statement. On the basis of that statement, they will ask you assumptions, courses of action, and conclusion, inferences, right? And then argument-based questions, strong argument, weak argument, right? So very important topic from logical reasoning part is critical reasoning. Then after, next, they will ask question from syllogism, right? This is again important topic in your logical reasoning part. Third important topic is puzzles. You'll find some questions based on puzzles. Not like ki bahut lengthy puzzle, no. Simple puzzle. On the basis of that puzzle, they will ask you one question only. ऐसा नहीं होगा कि like 5 questions वाली puzzle, no. Simple puzzles, and on the basis of that puzzle, they will ask you one question. You can expect 1 or 2 questions from simple arrangement also, not complex. Only from simple arrangements, right? In this particular part. And simple arrangement में भी वो वाला question नहीं होगा जिसके बहुत सारे parts होते हैं, no. You'll find simple questions with one question only, right? Some data will be given. On the basis of that data, they will ask you one question, right? ऐसा नहीं होगा कि जो generally हम arrangement करते हैं having 4-5 questions, no. Because यहाँ पे total we have 12 questions, so make sure कि simple arrangement में you'll find one question only, right? Then we have in this particular part, order and ranking. You can expect one question, order and ranking, right? Last year के basis पे हम लोग बात कर रहे हैं. Generally logical reasoning में what they can ask. Okay, order and ranking is also important topic, but you can expect one question from this particular topic, and वो कैसा होने वाला है? Easy होने वाला है, just based on that particular formula जो during classes हमने discuss किया. Left total number of participants is given by position of any particular person from left plus right -1. ये हमने बहुत डिस्कस किया है, राइट? फॉर ऑर्डर एंड रैंकिंग, एंड जो भी क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग का होगा उसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे बेस्ड होने वाला है, राइट? देन नेक्स्ट यहाँ पर और क्या पूछा जा सकता है? कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन दे कैन आस्क इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, राइट? कोडिंग एंड डिकोडिंग. सो मेजरली दीज आर द टॉपिक्स, राइट? जिससे आपका लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट में क्वेश्चन, एंड डेटा सफिशिएंसी आल्सो दे कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम डेटा सफिशिएंसी, right? So majorly these are the topics in logical reasoning part, जिससे logical reasoning part के questions पूछे जाते हैं. Critical reasoning, syllogism, puzzles, simple arrangement, order and ranking, coding, decoding, data sufficiency. I think कि हमने ये सारे topic during classes discuss किए बहुत detail में, right? Now we have second part, that is analytical reasoning. Again we are having 12 questions in this analytical reasoning part. As you all know, because यहाँ पर QA वाला part नहीं है हमारे पास, right? So QA वाला part नहीं है, so we can expect कि they will ask, generally they ask some basic maths questions in this particular analytical reasoning part, basic maths questions. आपको मैं last year का एक question बताता हूँ जो Symbiosis ने पूछा. Last year there was one question like what is 40% of 40, right? This was the difficulty, 40% of 40. अगर ये question अगर आप एग्जाम में देखो तो सोचो आपकी
कितने मजे आ जाएंगे आपके, है ना. What is 40% of 40? तो this was the question last year, right? So this will be the difficulty अगर आपके बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे तो, राइट. बेसिक मैथ्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, उनकी बात कर लेते हैं. बेसिक मैथ्स में percentage, as I told you, 40% of 40, that is from percentage, right? Okay. Then important topic, profit and loss. Then time and work, simple questions based on time and work. And then time, speed and distance, right? Simplifications, this is one topic जिसमें बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, राइट. एंड बहुत कम चांसेस हैं, बट दे कैन आस्क क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. सो दीज आर द टॉपिक्स जनरली बेसिक मैथ्स के टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बट डिफिकल्टी क्या होगी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया. लास्ट ईयर one question was what is 40% of 40. This was the difficulty, right? So make sure इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं. Now एनालिटिकल रीजनिंग में हमारे रीजनिंग वाले पार्ट से क्या हो सकता है, राइट. रीजनिंग की बात करें, सो फैमिली ट्री से you'll find one question based on family tree, blood relation, राइट. सेकेंड टॉपिक जिससे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, दैट इज सीक्वेंस. डेफिनेटली मिलने वाला सीक्वेंस, right. Third one, series, number series and alphabet series, right. Definitely you will find questions from these three topics: family tree, sequences, then series, number series and alphabet series. As I told you, this is important topic for all the exams. जहाँ भी analytical reasoning की बात करते हैं तो you'll definitely find some questions based on these particular topics, right. और क्या यहाँ पर हमारा इससे हो सकता है, डायरेक्शन से you can expect one question based on directions, right. Any other topic you can expect here is yes, visual reasoning. Very important topic, visual reasoning. You can expect some questions from visual reasoning also in your analytical reasoning part. And counting in figures, counting figures or counting in figures, number of triangles in a given figure or number of squares in a given figure. They can ask you based on that. Then I hope कि ये वाला टॉपिक भी हमने बहुत डिटेल में इसके ट्रिक्स डिस्कस की थी ड्यूरिंग वन यूट्यूब लाइव सेशन, राइट. अगर आप चाहें तो अभी भी आपको वो हमारी लॉजिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. विजुअल रीजनिंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. सीरीज इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. फैमिली ट्री इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. एंड साथ में यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस फ्रॉम बेसिक मैथ्स आल्सो. सो ओवरऑल लेवल क्या होने वाला है, अगर मैं 24 क्वेश्चंस की बात करता हूँ, 24 क्वेश्चंस में से 18 to 20 क्वेश्चंस बहुत इजीली डुएबल होने वाले, जिसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं. सो दिस इज वन पार्ट जो जिससे आप जीए का जो भी आपका होने वाला है कि आप वहां अगर कम अटेम्प्ट कर पाते हो तो उसको ये मैनेजेबल है, यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हो. 18 to 20 to 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हो, बट करने तो पूरे 24 हैं, राइट. बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, तो करने आपने पूरे 24 है. बट आप ये समझ के चल सकते हैं एग्जाम में अगर आपने इतना ये सारे टॉपिक्स के आपको बेसिक आइडिया है तो 18 to 20 क्वेश्चन बहुत इजीली डुएबल होने वाले हैं. सो दिस इज वन पार्ट जहां पर आपका स्कोर को बूस्ट कर सकता है, right. So this is all about logical reasoning and analytical reasoning part. Now sir, over to you. Great sir. Now yes, here is a question for you as well. मैं स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ तो मैं इसलिए मैं पूछता रहूंगा आपसे. yes, तो अब स्टूडेंट का ये कहना है कि सर मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ एस्पिरेंट हूँ. आप लोगों को पता है कि मैं मैथ्स मेरा कितना इंटरेस्ट एरिया होता है, मैं कितना डूब के मैथ्स करता हूँ. वैसा ही मैंने क्लैट के लिए भी प्रिपेयर किया था, वैसे मैंने आईलेट के लिए प्रिपेयर किया था, तो जो कि नहीं आया, राइट. तो आई वाज सो एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट दैट कि वो नहीं आया. बट क्या सर जो आईलेट में मैं अज्यूम करता हूँ, जो क्लैट में अज्यूम करता हूँ, क्या वैसे ही क्वेश्चंस शुड आई बी गेटिंग इन देयर या कुछ और वेरिएशंस इज व्हाट दैट आई नीड टू लुक एट? जनरली क्लैट में क्या होता है सर, क्लैट में हमारे डीआई आता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है. एंड डीआई इज द टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन बेसिक मैथ्स ओनली. परसेंटेज, simplifications, profit loss, time, speed, distance, time and work. इन्हीं के बेसिस पे we can design questions on data interpretation. So अगर आपने CLAT के लिए DI प्रिपेयर किया था and during DI की क्लासेस हमें कुछ भी नहीं करना सर, वही सब करना है, परसेंटेजेस सॉल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है. अगर आपको वो सब आता है, अगर आपने इसके लिए DI के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन की है तो डेफिनेटली ये वाला मैथ्स वाला पार्ट आपके लिए बहुत ईजी और डुएबल होने वाला है.
So that means what you're trying to help me out with is जो मैंने CLAT के लिए किया था, जो IELET के लिए किया था, more or less मेरा पेपर उसी के अराउंड ही घूमने वाला है, and Yes, more sir. of the thing would be either the reasoning part or a DI part rather than the pure mathematics, right? तो Yes, sir. सेम ग्राउंड्स पे इसका भी पेपर होने वाला है. सो आई कैन अज्यूम कि मेरे इसमें से 20 क्वेश्चंस तो होंगे ही विद 100% एक्यूरेसी. उसके बाद Exactly. थोड़ी अगर मैंने जरा से भी ज्यादा मेहनत की होगी तो उसमें मैं अगेन आई विल बी इन अ पोजीशन टू गेट सम 2 or more 4 questions. Correct? Yes, That's sir. what you're saying? Definitely. Right. Absolutely great. So Girish sir, I think that makes sense for us. Thank you. So now as we have legal reasoning now, so I'll have to invite Saral sir to help us out with the legal reasoning. So Saral sir, if you can help us out with the quality of questions, what composition, where, to what extent should I be thinking, and everything, if you can help us out with it. Right. तो सर let's start with थोड़ा सा डिफरेंस ट्रैक करते हैं between CLAT and AILET on one side and SLAT on the other. तो CLAT and AILET usually ask you question only on legal reasoning, pure legal reasoning question पूछते हैं, and especially पिछले साल तो पहले होता था कि थोड़ा current legal affairs आ जाता था AILET में, वो इस साल नहीं आया, तो they ask pure reasoning question, जहाँ पे reasoning question पूछे 100% pure reasoning question. But SLAT में थोड़ा सा difference ये है, they also ask legal knowledge based questions. तो ये जो लीगल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये हमारे पास 2-3 फॉर्म में आते हैं, राइट? वी गेट दिस इन 2-3 फॉर्म्स. फर्स्ट इज दे वुड आस्क यू फैक्ट्स. दे वुड आस्क यू फैक्ट्स लाइक if the speaker of the Lok Sabha were to resign, who would he tender his resignation to? That could be a question. Another question could be the name of some important case law, right? तो पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, केस लॉ रिलेटेड, सम इंपॉर्टेंट केस लॉ. ये कुछ ऑब्सक्योर केस लॉ नहीं पूछेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, केशव नंदा भारती, डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, एशबी वर्सेस वाइट, इस तरह के बहुत फेमस केसेस जो हमने क्लास में भी डिस्कस किए हुए हैं. यूजुअली हम क्लासेस में केस लॉ के नाम डिस्कस नहीं करते सर, क्योंकि क्या है कि वो रेलेवेंट नहीं होते बच्चों के लिए, क्लैट एलेट के लिए. तो जो केस लॉ के नाम हमने डिस्कस किया है, मोर लाइकली देन नॉट उसी लेवल के इंपॉर्टेंस के केस लॉ आएंगे. तो केस लॉ तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. देन समटाइम्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिकम इंपॉर्टेंट. तो सम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, स्पेशली जो रिसेंटली हुए हैं या फिर हिस्टोरिकली जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, they become important for us. So as far as legal knowledge is concerned, that is part 1. Facts based question आते हैं. Second fact based question जो आते हैं वो आपके हैं maxims and legal phrases. तो voluntary non-fit injuria क्या होता है, right? What does it mean? Law does not deal with trifles. तो उसके 4 maxims दे देंगे, पूछेंगे भाई इसमें से कौन सा maxim है. Then they might ask कि अच्छा what does impugned order mean? They will give you 4 options, you have to decide. तो हर साल 2-3 सवाल आपके इस लैंग्वेज पे आ जाते हैं, बेसिकली लीगल लैंग्वेज पे आप कह सकते हो सवाल आ जाते हैं. Then the big difference between CLAT and AILET is, CLAT AILET on one side and this exam on the other is कि they usually do not give principle, right? वो principles नहीं देते. तो if they would say कि आप CLAT AILET में आपको मिलेगा कि भाई आपको बताते हैं कि डिफॉर्मेशन क्या है, थेफ्ट क्या है, और फिर एक फैक्ट सिचुएशन दे देते हैं, आपसे पूछते हैं कि भाई आप डिसाइड करो ये डिफॉर्मेशन के लिए लायबल है या नहीं है, या फिर क्या रीजन है, थेफ्ट के लिए लायबल है नहीं है, क्या रीजन है. यहाँ पे SLAT में they usually do not give principles, they expect you to know the law. So ऐसा नहीं, again it's not as if they would expect you to know some very minute part of administrative law, ऐसा यूजुअली नहीं है. बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट लॉज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो हम क्लासेस में करते हैं, वही लेवल का एक्सपेक्टेड होता है. थोड़ा मिसलेनियस लॉ भी हम करते हैं, जहाँ पे फैमिली लॉ या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ जो हम डिस्कस करते हैं, अगेन मिसलेनियस लॉ में ऊपर से आएगा. पर हाँ, अगर वो टॉर्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में से पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल्ड क्वेश्चन आ सकता है. तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन पेपर. नाउ what should we be doing in the next 2 to 3 days? So the first thing that we should do is that a list was circulated of illustrations, right? A list of illustrations was circulated at the time of AILET. वो हम फिर से circulate कर देंगे. जो criminal law और contract law की जो legislations हैं, उन legislations के अंदर there are certain illustrations. वो illustrations as it is उठ के आ जाती हैं. तो अगर वो illustration हमने पढ़ी हुई है, हमें strike कर गई, हम फटाफट से आंसर कर देंगे. सेकेंड, वी नीड टू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स. तो अगर मैं लीगल प्रिंसिपल की बात करूं, मान लो मैं नेग्लिजेंस की बात करूं,
तो जैसे ही मैं नेग्लिजेंस की बात करूं, मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए भाई नेग्लिजेंस के 3 एलिमेंट्स होते हैं. देयर शुड बी अ ड्यूटी ऑफ केयर, देयर शुड बी अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी देयर शुड बी डैमेजेस. ये एलिमेंट्स मेरे को इमीडिएटली याद आ जाने चाहिए. क्यों? क्योंकि अब मेरे पास ये एलिमेंट्स एज अ प्रिंसिपल नहीं गिवन है, बट दे वुड स्टिल एक्सपेक्ट मी टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स. तो जो लीगल कॉन्सेप्ट्स हमने क्लासेस में डिस्कस किए हैं वो हमारे लिए रेलेवेंट हो जाएंगे, राइट? देन यू शुड रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स, राइट? इसके भी पिछले 2-3 साल में इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस आए हैं. तो on that basis I think people should be able to prepare. Again, the difficulty of questions is not high. Difficulty of questions is rather easy, especially जो reasoning based questions है. Reasoning based questions historically आसान ही आए हैं, पर जो थोड़े facts वाले सवाल हैं वो केवल इंसान तभी कर पाएगा जब थोड़ा उसने background में पढ़ा हो, तो थोड़ी details याद की हो. Otherwise उन क्वेश्चंस में जो केस लॉ वाले क्वेश्चन आ गए या फिर मैक्सिम्स वाले क्वेश्चन आ गए, उनमें थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है अगर बच्चे ने ध्यान से ना पढ़ा. सो एनी क्वेश्चंस सर और किड्स? Obviously, sir, there are questions from the students' behalf. So the first question is, what you're saying is, let me pick it from bits and pieces here. Maximum legal phrases. So what you're saying is, maxims and legal phrases is something like, एक बार अगर मैंने देखा होगा तो वो मुझे याद रहेगा. Is that the thing that I can definitely go along with it? एक बार देखा होना जरूरी है, then I'll be in a position to remember that. Is that? Am I right on saying that? Not necessarily, sir. कुछ मैक्सिम्स हैं जो आपको याद रह जाएंगे, कुछ मैक्सिम्स याद नहीं रहेंगे. जैसे अब वॉलेंटाइन नॉन-फिट इंजूरिया है, वो हम टॉर्ट लॉ में डिस्कस करते हैं तो इसलिए याद है. पर अगर मैं बोलूं कि लॉ डज नॉट डील विद ट्राइफल्स, व्हाट इज द मैक्सिम रिलेटेड टू इट, वो हमें इमीडिएटली याद नहीं आएगा. इनवर्स में नहीं याद रहेगा, बट with some reference we may get that. तो इसके लिए एक ट्रिक है सर, इसके लिए एक ट्रिक है कि यू ट्राई एंड फाइंड आउट. जैसे लॉ है, law is referred to in maxims in various forms. It is referred to as use, it is referred to as use, it is referred to as legis, right? Correct. ये कुछ चीजें जो है हमें आइडेंटिफाई करनी है, राइट? अगर हम बात करें राइट की, ठीक है, तो sometimes it is referred to as CUET, sometimes it is referred to as use only, right? तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजें जो है आइडेंटिफाई कर पाए, तो कि भाई यूज है तो राइट का मतलब है या लॉ से रिलेटेड है, तो it becomes easy for us to then figure out. Absolutely. So what you're trying to tell is, अगर हम उनका Latin base हमें पता लगे, French base थोड़ा सा पता लग जाए, तो ये हमारे लिए comfortable हो जाएगा in order to understand that. Okay. Another question, sir. Talking about this case law, इस case law में कहाँ तक जा सकता हूँ? Can I go to the Machi Singh versus State of Punjab, वहाँ तक जाऊँ, या should I be staying to the latest references there? तो इसका case law का range क्या रहेगा? लेटेस्ट केस लॉ की लिस्ट जो है, आई डोंट यूज हिस्टोरिकली लेटेस्ट केस लॉ ये लोग नहीं पूछते हैं, बिकॉज लेटेस्ट केस लॉ को अभी टाइम ही नहीं मिला है टू बिकम पॉपुलर. Absolutely. राइट? तो अगर मैं लेटेस्ट केस लॉ की बात करूं तो अगेन वी शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ सम 10-12 केसेस. वी विल शेयर दैट अगेन. हमने AILET के टाइम पे शेयर की थी, वी विल शेयर दैट अगेन. तो वो 10-12 केस है, उससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा. वो 10-12 केस एक सफिशिएंट होगा टू स्टार्ट विद टू गिव अ किक टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देयर. गुड एनफ. एंड हिस्टोरिकली थोड़े केस हमें देखने पड़ेंगे, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केसेस जो है हमें हिस्टोरिक केसेस देखने पड़ेंगे. Okay. Now the question comes down here is the one last question, then we'll go to the proper end of that. The third says, if they're not going to provide us with the principles, then how do we actually handle the questions? अपनी एग्जिस्टिंग लीगल नॉलेज पे, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए. अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लीजिए आई स्टोल अ पेन फ्रॉम यू, right, and then X stole that pen from me. Has X committed theft? Okay, good right? enough. Now in this we need to remember कि जो theft का principle था, theft dealt with possession, it did not deal with ownership. Now when that pen is with me, I do not have ownership of that pen, but I do have possession of that pen. So if X takes away the pen from me without my consent, then he is taking it away from my possession, which is sufficient to constitute theft. So here those principles जो इसलिए constituent element मेरे को याद होना चाहिए. अगर मेरा theft आया दिमाग में, तो it should be movable property in the possession, should be moved with the intention of taking away, and intention should be dishonest. ये पांचों चीजें immediately दिमाग में आ जानी चाहिए.
Absolutely making sense. Absolutely making sense. So that means that again goes back to the basics. जो हमने पूरे साल भर पढ़ा है वही चीज बेसिक्स के अंदर आ गया फिर. That's what you already said. So sir, how many questions should we be expecting with 100% accuracy, and how many with the variating between 70 or anything less than that? 8 to 9 questions with 100% accuracy. क्योंकि वो उनमें से 3-4 रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे और 4-5 वो बहुत ही आसान सवाल आते हैं, मुझसे मुश्किल सवाल नहीं आते. 3-4 आसान क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग बेस्ड और 4-5 स्लाइटली इजी आपके पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. 2-3 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये लग सकता है कि भाई मैं श्योर नहीं हूँ या फिर ये पढ़ा है याद नहीं आ रहा, उस तरह का सिचुएशन हो सकता है. तो वहां पे थोड़ा एजुकेटेड गेस लगाने की जरूरत पड़ सकती है. तो एजुकेटेड गेस में जब हम लॉ में एजुकेटेड गेस की बात करते हैं, वन थिंग दैट इज ऑफन वेरी यूजफुल इज टाइम पीरियड्स. अब अगर मेरे को पता है कि भाई 44th अमेंडमेंट 70s में आया था, तो आई ऑल्सो नो कि 40th अमेंडमेंट 70 से पहले आया होगा, राइट? अगर 105th अमेंडमेंट अभी 2021 में आया है, तो मुझे पता है कि भाई इससे पुराना कोई, इससे बाद कोई 106th अगर कोई अमेंडमेंट है तो उसके बाद आया होगा. तो ये कुछ छोटे छोटे अगर टाइमलाइंस मेरे को याद रह जाए वो हेल्प कर जाते हैं. शायद एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, पर हाँ 2 आंसर एलिमिनेट हो जाएंगे, तो चलो ठीक है, एक अकड़ बकड़ बम्बे. Right. So what you're talking about are those benchmarks. You are talking about those pegs, वो stepping stones जहाँ से पता लगे कि आगे का पीछे का reference हम निकाल सकते हैं. Absolutely correct, sir. Absolutely correct, sir. So, Girish sir, Hema ma'am, and Asal sir. So can we conclude with this that overall, if any of the student would solve 50 questions with 100% accuracy and the remaining 10 questions with a little dilly-dally portion there, he is at a safer side for that? Can we assume that? Yes. Yes, sir. Okay. Yes. So, but obviously, because all of us said that 9 to 10 questions. So I'm taking 10 questions each, right? And we are also talking about 11 questions as well. So even if I say 50, even if I say 49, so 49 with 100% accuracy, what I'm talking about is, again, 49 questions with 100% accuracy, and the remaining questions can be done with 70% less than accuracy. So perhaps that would be a good score to get into. I'm sure all of you would agree with that. Because when we look into the last year's SLAT cutoff, we again find that, because generally they do not declare per se, but what we all need to understand here is that is also around that. But when I refer to, but when I refer to the year, which is 2020, वो एक special condition था, वो एक special case था. So what I say is 50 plus should be a good score to get into, right? I'm sure all of you would agree with that. Very good for that. And this can be from any of the sections. Again, some sections a little lower, some section on a little higher side. That is how the student is finding out there. Correct. Absolutely great then. So, boys and girls, I'm sure we would have answered all your questions to this. You would have got the picture of how we are supposed to go with this. You want to say something? Sir, if you don't please. So, as a motivation, I want to add about how good or bad these colleges are. Often students keep asking कि sir सिम्बी नोएडा better है या फिर विप्स IP यूनिवर्सिटी. तो मैं एक चीज बहुत ही emphatically कह देना चाहता हूँ कि on the basis of the people that I've met in the industry, I can tell you that Simbi Pune is not worse compared to your top NLUs in terms of the quality of teaching, in terms of the peers that they have. It is good. It's a college that is better than your tier 2 NLUs. तो अगर NLU उड़ीसा से जो नीचे आप कॉलेजेस गिन रहे हो उनसे बेटर, राइट? एंड NLU उड़ीसा को I would rank quite high. Then Simbi Noida is almost at the same level as your WIPS, basically IP यूनिवर्सिटी में मेन कैंपस को छोड़ के बाकी अगर हम कैंपसेस गिन लें तो बाकी कॉलेजेस गिन लें तो उनसे बेटर है सिम्बी नोएडा, राइट? वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ पीयर ग्रुप, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप्स, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, राइट? So, and I have met some very excellent people from both of these colleges, which leads me to believe that if you are in these colleges, you make use of the facilities that they provide you. You are at a much better place than your tier 2, tier 3 NLUs or IP University or Nirma, right? So, in terms of private colleges, I would place this only second to OP Jindal. That's the only college that I would place Symbiosis Pune second to. Otherwise, Symbiosis Pune is an excellent college, and you should be extra motivated to crack this exam so that यार अगर या तो मेन हमारा कॉलेज बन जाए या फिर एक बढ़िया बैकअप बन जाए, राइट? Even if CLAT में we are somewhere in the middle कि भाई हमें श्योर नहीं है कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा. So if Symbiosis Pune is your backup, then that's a beautiful position to be in.
Absolutely, absolutely, sir. That definitely prompts student to work well for symbiosis, right? So, boys and girls, I'm sure we would have helped you out with the strategizing element. Now you know what you're supposed to do. Now you know how you're supposed to go about this. I would also recommend that whenever you appear for any of the papers, right, which you're supposed to appear this on 3rd. So whenever you appear for this paper, please make sure that you appear with a calm mind. Always, whenever you go for the paper, there's always a probability that you would go with a zero mind, that you would not know even if you would have read something or not. You would have set that kind of feeling. भूल जाइए सब चीजों को. जब आप बैठेंगे आराम से एक एक करके क्वेश्चन उठाने की कोशिश करेंगे, जैसे हेमा मैम ने कहा था कि आपको लगेगा 2-4 से क्वेश्चन से ज्यादा आपको आते ही नहीं है, राइट? ऐसी फीलिंग एक्चुअल में सभी क्वेश्चंस के साथ आएगी कि शायद 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जब आप पिक करना कोशिश करते हैं, देन इट स्टार्ट्स मोमेंटम. हेमा मैम, आई वुड डेफिनेटली एग्री विद यू. दिस इज व्हाट जनरली हैपेंस विद ऑल द स्टूडेंट्स एंड इवन विद अस. जब भी हम भी अपेयर करते हैं तो पहले 0 होते हैं, फिर 0 से एक 1 2 3 4, देन वी स्टार्ट विद all the question paper, right? So thank you, boys and girls. Thank you for being there. And that was a wonderful session again. Thank you all the faculty members, Saral sir, Girish sir, Hema ma'am. Thank you for being there. I'm sure students would have got the benefit from that. So we're going to catch again for the analysis session soon on the 3rd Sunday. That is at 3 p.m. For the same SLAT session, right? For all the students who are there, I would request you all to please make sure that you are there at the analysis session, so that you should get the first-hand information there. So boys and girls, for all those who have still not joined the channel, make sure that you have joined this channel. And for all the students who are listening to us and still not like the video, I would request you all to please make sure that you like the video, because these videos would then prompt you to get another videos of the same variety. Thank you for being there. Thank you, faculty members. Bye-bye. Thank you. Thank you, sir. Bye. Bye-bye.